त्रिपुरा में भी ट्राइबल लोगों का उसी हाल है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, एक समय ऐसा था कि जो अभी ट्राइबल या जनजाति हम लोग बोलते हैं, त्रिपुरा में 183 राजाओं ने राज किया पहले। और भारत जब स्वाधीन हुआ उस समय त्रिपुरा एक स्वाधीन राज्यों के तौर पे उस समय इंडिया से अलग था। 1949 में त्रिपुरा इंडिया के साथ मार्च किया और उसी दिन से अभी त्रिपुरा इंडिया का एक स्टेट के रूप में इंडिया में हूँ। जैसे कि 1949 के बाद 1971 तक अगर देखा जाए, बांग्लादेश जो फ्रीडम के लिए जब मूवमेंट चल रहा था, 50 से 51 से लेकर 71 तक बांग्लादेश से बहुत माइग्रेंट त्रिपुरा में हुआ। और जहां जनजाति संख्या एक समय 80 से 85% था, वो कम होते होते अभी सिर्फ 31% हो गया त्रिपुरा में। अभी 19 कम्युनिटी है त्रिपुरा में और 19 कम्युनिटी में कुकी कम्युनिटी भी एक है। लेकिन उसमें अभी जो बिल लाया गया, दालोंग जो ट्राइब है, ये दालोंग जो समुदाय, ये खुद को कुकी बोलने में ये राजी नहीं है, क्योंकि वहाँ का रीजनल जो लैंग्वेज, उसमें कुकी का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। तो इसलिए ये लोग बहुत सालों से इन लोगों का मांग था कि इन लोगों को अलग एक स्टेटस दिया जाए और शेड्यूल ट्राइब में भी इन लोगों को इंक्लूड किया जाए। त्रिपुरा सरकार ने, खास करके बीजेपी सरकार जब से त्रिपुरा में आए 2018 से, हम लोगों ने जनजातियों के विकास के लिए काम करना शुरू किया। एक समय यह भी देखा गया, यह कांग्रेसों का साथियों ने, एक दो साथियों ने, खास करके प्रद्युत बदलोई जी और जम्मू कश्मीर से मासूदी जी, इन्होंने भी चर्चा में भाग लिया और बहुत सारे उदाहरण इन्होंने भी दिया। मैं बोलना चाहता हूं, अगर कांग्रेस और बाकी जितना भी सरकार केंद्र में हो या तो त्रिपुरा में, अगर शुरू से इस विषय को गंभीरता से देखता तो और बहुत साल पहले ये काम हो सकता था। लेकिन त्रिपुरा में सिर्फ 2018 से बीजेपी 4 साल हो गया, बाकी 25 साल त्रिपुरा में कम्युनिस्ट का शासन था, उससे पहले भी, और बाकी कांग्रेस का राज था। लेकिन कभी भी सीपीएम हो या कांग्रेस हो, कभी भी जनजातियों का विकास के लिए काम नहीं की। तो इसीलिए एक समय त्रिपुरा में ये मांग भी उठा कि 1949 में हम लोग इंडिया के साथ मार्च किया था, लेकिन ये भूल था। और इसीलिए ये भी मांग उठा था कि हम लोग फिर अलग होंगे। तो अभी भी सर त्रिपुरा में कुछ लोग, अभी कोई त्रिपुरा लैंड के लिए, कोई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए ये भी मांग आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जो कांग्रेस और बाकी जितना भी दल त्रिपुरा को शासन किया, इन लोगों का गलत जो पॉलिसी था, उसके वजह से हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और अर्जुन मुंडा जी को ये बिल लाने के लिए, और खास करके राज्य सरकार विप्लव देव जी की नेतृत्व में जो राज्य सरकार अभी काम कर रही है वहाँ, क्योंकि राज्य सरकार ने इससे पहले एक फील्ड स्टडी किया और इस दालोंग कम्युनिटी के बारे में रिसर्च किया, और इसमें जो रिपोर्ट आया, दिखा गया कि दालोंग कम्युनिटी में शिक्षित
का जो संख्या है वो बहुत, सर एक मिनट, बहुत ज्यादा है। और तापिर गांव जी ने ये भी बोला कि एक थंगा दालुंग जी को कल्चर और इनका कल्चर के क्षेत्र में इनका जो योगदान, उसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। तो ये अच्छे उद्योग है। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में जो TTADC तापिर गांव जी ने भी बोला, वहाँ 3 टायर सिस्टम जो पंचायत में जिस तहत वो फंड दिया जाता है और TTADC में वो नहीं दिया जा रहा है। तो 125 जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट वो भी पेंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती जी, वो देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री इंद्रहेंग सुब्बा जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. I stand in support of the Constitution ST Orders Amendment Bill 2022, which seeks to recognize Darlung community as a sub-tribe, as a tribe in Tripura. On behalf of Sikkim Krantikari Morcha and our leader P.S. Tamang, I'd like to congratulate Darlung community for being included in scheduled tribe list. At the same time, I belong to a state which is very small, and I'm the lone member from my state. So we as a state, as the 22nd state in Indian Union, our Sikkim was merged in 1975. Before that, every community in Sikkim were equal and had the same tradition, culture, or different traditional culture of their own as a tribal community. However, after 1975, among 3 major communities, Sikkimese Bhutia Lepcha and Sikkimese Nepali, only Sikkimese Bhutia Lepcha were included in 1978 as scheduled tribe. Later on, in 2002, 2 more tribes, Limbu and Tamang, were included. And I'd like to bring to the notice, I think Honorable Minister Sir is well aware of the issue, that these 2 communities are yet to have their seat reservation in Sikkim Legislative Assembly. Despite number of requests from the state government, these 2 communities are yet to have their reservation. At the same time, we have other communities within the Sikkimese Nepali community which do have traits of tribal. However, they have not been recognized as tribal in the Constitution of India. These communities are Gurung, Mangar, Rai, Sunwar, Mukhia, Jogi, Thami, Yakha, Bahun, Chetri, Newar, and Maji. These 12 communities, though they are economically, socially, and culturally the same as other Sikkimese communities, they also deserve to be given the status of scheduled tribe, yet they are yet to get their share and be recognized as scheduled tribe. So I take this opportunity also to request Honorable Minister Sir and the Government of India to take into account these 2 very important issues of Sikkim, where Limbu and Tamang, 2 communities, are yet to get their share of seat reservation in Sikkim Legislative Assembly, and the remaining communities, the 12 communities, which have the tradition and culture as other tribal groups in Sikkim, however, they are yet to be recognized as scheduled tribes. So I take this opportunity to request the Honorable Minister, the government, and also thank the government for all the policies that they have taken to uplift the tribal community. Thank you very much. With this, I support the bill. Thank you. Thank you very much. Shri Nabha Kumar Sarnia ji. थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो हमारा अर्जुन मुंडा जी ने बिल लाया है दार्लुंग कम्युनिटी को इंक्लूड के लिए, ये मैं सपोर्ट करता हूँ और मेरे तरफ से उनको हार्दिक स्वागत है। सर, जैसा दार्लुंग को अभी इंक्लूड किया है कुकी से हट के, हमारा असम में भी ऐसा इशू है। स्पेशली
थेंगाल कोसारी, सरनिया कोसारी और मराही कोसारी, उन लोग भी अभी पहले से जब से ये ऑर्डर निकला है उससे अभी वो ट्राइबल सजा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बीच-बीच में ये जो मंगोलोइड ग्रुप का, लाजार कोसारी ग्रुप का लोग है, लेकिन वो बीच-बीच में विवाद होता है क्योंकि सोहने कोसारी लोग बड्डो कोसारी से, राभा कोसारी से पहले से ही ट्राइबल सजा ले रहा था सर्टिफिकेट, लेकिन बीच-बीच में निजी स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसको एक मुद्दा बनाया था। सर, मैंने जब ये इलेक्शन जीता था 2014 में, मेरे ऊपर भी इलेक्शन पिटीशन लग गया, उसके बाद रिट पिटीशन लग गया, मैं हाई कोर्ट जीत गया, सुप्रीम कोर्ट जीत गया, फिर अगेन 19 में हमारे ऊपर केस आ गया, फिर अभी रिट पिटीशन केस चल रहे हैं, फिर एसटी कमीशन में ये चल रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसा सिचुएशन का जो मुकाबला करना पड़ा। तो मेरे आज ये पार्लियामेंट से मेरा मुंडा जी से आपके जरिए असम गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो थेंगाल कोसारी है, सोयना कोसारी है या मराही कोसारी, उसको भी ऐसा लालुंग जैसा एक्स्ट्रा उसका बनाना चाहिए। और एक बात सर, हमारा असम में और 6 कम्युनिटी जो अहोम, कोसारी, कोस, टी ट्राइब्स और मरान मोटो उसको एसटी करने वाला है। पहले से उधर का जो हमारा ट्राइबल, एग्जिस्टिंग ट्राइबल है, उन लोग के विरोध थे, अभी उन लोग ने मान लिया है अगर एग्जिस्टिंग ट्राइबल को कुछ नुकसान नहीं होगा तो उसको सीडलिंग में लाना चाहिए। तो मेरा साल से वही रिक्वेस्ट है असम गवर्नमेंट से, ये करना चाहिए। और सर, और एक जस्ट ओनली 1 मिनट, और दूसरा एरिया से भी हमने जो गुजर गया उसी में भी कुछ ऐसा कम्युनिटी है जिसको ट्राइबल में डाला गया है गलती से। मुझे हमारा मिनिस्ट्री वही है जो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ट्राइबल लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनको जो रिजर्वेशन है उसका कोटा भी अभी नहीं मिल रहा है। हमारा यहाँ तो सब मुद्दा आया है, तो इसलिए सर मेरा विनती है जो अभी ऐसा लोग है उसको फिर ठीक ठाक करना है, अभी बहुत लेट हो गया है। और हमारा जो स्पेशली असम का जो ये सोयना कोसारी, मराही कोसारी और थेंगाल कोसारी, उसका जल्दी से जल्द इसमें लाना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अगाथा संगमा जी। धन्यवाद चेयरमैन जी, आपने मुझे ये मौका दिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल पे पार्टिसिपेट करने के लिए। Sir, I would like to, at the outset, on behalf of my political party, the National People's Party, I would like to give our support to this amendment that is being brought in order to include the Darlong community into the Scheduled Tribe list by the Constitution Scheduled Tribe Order 1950 Amendment Bill. Sir, while holistically, we support this amendment, I would like to say that there are very important issues regarding to the scheduled tribes in this country that needs to be given due attention. According to the Niti Ayog's AWST, the Allocation for the Welfare of Scheduled Tribes guidelines, it is mandatory to allocate an amount that is proportionate to tribal population. Initially, the budgetary allocation of rupees 7,355.76 crores and rupees 7,084.07 crores were made for the Ministry of Tribal Affairs for the year 2020-21 and 21-22 respectively, to administer their central sector and centrally sponsored schemes, beside 2 official programs, Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme and the Grants and Aid under Article 275(1) of the Constitution. However, the allocation was reduced to rupees 5,472.50 crores in 2021 and 6,126.46 crores in 2021-22 at the revised estimate stage. The Ministry of Tribal Affairs could not fully spend the RE allocation in 2020-21 and have been able to spend 4,070.04 crores in 2020-21 up to 15 February 22, leaving apart the cut in allocation made
by the Ministry of Finance for the ministries due to COVID. Sir, the National Commission for Scheduled Tribe reports the Standing Committee on the Social Justice and Empowerment has found that the National Commission has been dysfunctional for the last 4 years and has not delivered a single report to the Parliament. Standing Committee found that these reports, though finalized by the Commission, are withheld with the Union Ministry of Tribal Affairs, as was pointed out by my colleague Mr. Bordoloi. Ministry needs to expedite working and presentation of reports, address the Commission's manpower and budget shortage so that it can be actively worked towards the welfare of the ST community. So in terms of the tribal health report, as I said, we need to look at the holistic development of the scheduled tribe communities. The expert committee on tribal health was constituted jointly by the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Tribal Affairs in 2013, and the report was submitted in 2018. The Tribal Health in India, Bridging the Gap and a Roadmap for the Future. It was India's first comprehensive report on tribal health, and it still awaits implementation. The tribal population has endured historic and a systematic discrimination, which needs to be corrected. मैडम मंत्री जी का जवाब Sir, just 4:45 पर है आपसे और सभी सदस्यों से निवेदन है कि अपनी बात संक्षिप्त में रखिए. Sir, according to the Tribal Health Report 2018, about 55% of country's tribal population now resides outside their traditional habitat. The report cites that the census to 2011 found that 32% decline in the number of villages with 100% tribal population between 2001 to 2011. Sir, the impact of displacement and denial of access to forests have impacted lives and health, especially of the particularly vulnerable tribal groups. These communities have lived in forest and are traditionally dependent on forest resources for their subsistence, as identified by the Government of India itself. In the absence of adequate access to the forest, the Adivasi communities and others that are deprived of their food insecurity and diversity and livelihood security, which inevitably results in poor health outcomes. Studies on women experiences of such displacement in India have shown their ordeal include vulnerability to violence and early marriage. So, according to the Tribal Health Report, about 41% of the tribal population is illiterate as compared Please to conclude the... Okay, sir. So in conclusion, I do have a few statistics to put, but since there is paucity of time, I would just like to say that while, my political party, the National People's Party, we welcome this amendment and inclusion of the Dalong community into the scheduled tribe list, we, as a political party, would urge the government to look at a holistic well-being of the tribal communities. And, in order to ensure that, I would request our Honourable Minister to look into the various aspects that I have already pointed out that would give us a holistic indicator of the well-being of tribal communities. Thank you. श्री बी मेहताब जी, सभी सदस्यों से निवेदन है कि अपनी बात संक्षिप्त में रखिए. 4:45 बजे मंत्री जी का जवाब आना है, तो मेरा निवेदन है. 3 points I have to make relating to this bill. Bill was introduced in February this year, and Article 46 of the Constitution enjoins the state to take special care in promoting the educational and economic interest of the weaker section. The state government of Tripura has requested to include Darlong community as a sub-tribe of Kuki in entry 9 in the list of scheduled tribes in respect of state of Tripura. And that's why this bill is confined to that issue only. But taking advantage of this bill being discussed here, every state has their own issue to bring forth before the government through this House. And I have a Odisha's perspective. The government of India, I would say the scheduled tribe identified from Odisha are 62 in number, including the tribes of Godaba, Ghara, Kharia, Kondha, Matya, Oraon, Rajuar, Santals.
As far as particularly vulnerable tribe groups, PVTG, are concerned, Odisha has the highest number of PVTGs. In 2020, the Odisha government further identified 888 villages, hamlets inhabited by PVT, that is particularly vulnerable tribal groups. Since 1978 onwards, 169 proposals have been sent to Government of India, Ministry of Tribal Affairs at different point of time for inclusion in ST list of Odisha. At present, 149, new 140, resubmission is 9, proposals are pending with the Ministry of Tribal Affairs, Government of India for inclusion in ST list of Odisha. Honorable Chief Minister of Odisha, Mr. Naveen Patnaik has written to the Ministry of Tribal Affairs in a letter dated 19th February 2021 for consideration of these tribes in the ST list. Some of these communities proposed for inclusion are actually subsets or phonetic variations of the name of the existing ST communities, but are still deprived of the benefits availed by the scheduled tribe with similar tribal characteristics residing in different parts of the state who have since been notified as scheduled tribes. Inclusion of the left out communities will give them their much needed recognition as a scheduled tribe. The ruling party in the state, that is Biju Janata Dal, has also been pressing for its long-standing demand for a caste-based census to ascertain the actual population of the various classes and as a result take up several developmental activities for their all-round development. Odisha Cabinet in 2020 passed a resolution to that effect. Sir, I would like to place my demands here on behalf of my state. The task force examined the proposals for inclusion from various states, including 107 proposals from Odisha, and in its report notified in 2014 has recommended the following 10 communities of Odisha for inclusion in scheduled tribe list of the state on priority basis. Inclusion of Bhanja Puran, Tamodia, Tamudia, Tamaria, Tamuria, Puran and Puran. Bhagavata Bhukta, Bhokta or Bhokta. These are all spelling differences, but this is the problem that Durua, Kolongo, Nakasia, Pabo, Khondayat Bhuya, Tumudia or Tamadia, Chapua Kamar and Kondho. Some other changes that are sought is Kondho Kumbhar, a subset of Kondho at serial number 31 of scheduled tribe list of Odisha. Sir, there is Jodia, the spelling is Jhodia or Jodia. When we pronounce it, it is same, or Jadia. It is all Jadia, Jodia, Jodia. And these are all synonyms. Similarly, Chuktia, Gunjia, Soro. And here I would like to mention, sir, I have earlier repeatedly drawn the attention of the minister also. Sabaro, Sabar and Soro. These are the RI who goes out for enumeration. He writes it as he hears it. And that is the main problem, that they get excluded from the benefit that a scheduled tribe is expected to get. Similarly, Mankidia should be included as synonym of Makiridiat in serial number 47 of ST list. All these lists have been provided to the government by Odisha government, and all these are still pending with the ministry. Of course, the minister Thank you very much, Mehtab ji. Minister will say it has to do with the census and with the population register. But Paudi Bhuya, Chukutia Bhonja, all these are to be included. Recently, I'll just draw the attention of the minister through you, sir. 1 minute. I'll take just 1 minute. And that is relating to recently the Supreme Court, perhaps yesterday or day before, has come out with a decision. The Supreme Court wants to fix foolproof parameters to determine if a person belongs to a scheduled tribe and is entitled to the benefits due to the community. Further, it has said in its judgment, the judiciary is no longer sure about an
affinity test. Earlier what was being done, that yes, he is similar to the other tribe. So that is an affinity test. But Supreme Court has said day for yesterday, last week, that this affinity test will not do because they migrate. They are in urban areas. And in that respect, the anthropological and ethnological traits Kindly to link conclude. a person to a tribe is not complete. So there are separate method has to be done. And now the Supreme Court has taken the onus on itself, not allowing the Parliament to determine. Thank to you. allow it on itself that we will decide and a larger bench will decide. I hope the government will respond through this deliberation today. And if they want to do it later, but this is what happening in Supreme Court. Thank you, Mehtab ji. Thank you. Thank Thank you, you. Mehtab ji. Shri Girish Chandra ji. माननीय सभापति महोदय जी, सभी से निवेदन है कि मुझे अपनी संविधान बात 2 या तो अनुसूचित 3 जाति मिनट जनजाति में आदेश समाप्त बिल। कीजिए, क्योंकि हमारे पास और भी 4-5 मेंबर है। 2-3 मिनट में आप अपनी बात को बिल समाप्त कीजिए। 2022 पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, समय पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन किया जाता रहा है। पहला यह परिवर्तन वास्तविक रूप से उन जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता रहा है जो वास्तविक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में व्यवस्था इसलिए ये की थी कि देश में कोई भी व्यक्ति का समूह वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित जातियों के साथ सद्भाव और समभाव की स्थिति कायम की जा सके। इसमें सबसे अधिक शोषित व अछूत जातियों को अनुसूचित जाति और आदिवासी जातियों को जनजाति की सूची में रखा गया है। इसी आरक्षण के प्राप्त करने के कारण इन समुदायों को थोड़ा सा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास महोदय हुआ है। लेकिन यह भी परिपाटी चली आ रही कि देश में तमाम जाति अनुसूचित जाति अनुजाति की सूची में शामिल होने के कारण आतुर रहती हैं। अब यह आतुरता ही कुछ राजनीतिक दलों का वोट लेने का अधिकार बन चुकी है। कहने का आशय यह है कि यह देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी वर्ग विशेष को शामिल करना उस वर्ग विशेष के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने दल के वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी का ये मानना है कि यदि कोई जाति किसी भी श्रेणी से अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है तो उस जाति के मूल रूप पहाड़े आरक्षण कोटे को उसके जनगणना के अनुसार मूल रूप से काटकर उस श्रेणी में जोड़ दिया जाना चाहिए जिसमें शामिल किया जाता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आग्रह करना चाहूंगा कि हम सभी को ये ज्ञात है कि देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का शोषण हुआ है। इसी शोषण की मुक्ति के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में दलित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के ऊपर शोषण ना हो इसके लिए विधि का निर्माण हुआ है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण अभी हाल में राजस्थान की तमाम घटनाएं आपने देखी होंगी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान का निर्माण तो हो गया है लेकिन इनकी सार्थकता तभी कायम होगी जब इनको भली भांति अमल में लाया जाएगा। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार शिक्षा के अच्छे प्रबंध करे जिससे ये समाज पूर्ण रूप से शिक्षित बन सके और उनके बाद जो बाबा साहब ने संविधान में सरकारी नौकरी में कृपया समाप्त कीजिए। उसी के आधार पर पूर्ण कृपया भागीदारी ले सके और अपने आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती जसकौर मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखिए मैडम। अब आप पहले ही संक्षिप्त बोले, हमारी पार्टी से तो बोले ही 2 लोग हैं। माननीय सभापति जी, त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 का संशोधन पेश किया है। मैं उसके लिए समर्थन में खड़ी हुई हूं और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से कुछ जातियां पिछड़ रही हैं। हमारी सरकार उन सभी जाति वर्ग को मुख्य धारा में लाने हेतु संविधान में संशोधन करती आई है। संशोधन के साथ साथ विगत समय अरुणाचल में भी हुआ,
छत्तीसगढ़ में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी संशोधन हुए और आज त्रिपुरा में कुकी जाति समुदाय के जनजाति के भाइयों को आज 9वीं सूची में जोड़ा जा रहा है। मैं ये कहूं कि ये भूली बिसरी जातियां जिस तरह से जल जंगल और जमीन के अंदर अपना गुजर बसर करती रही हैं, उसी संदर्भ में आज हमारे मंत्री जी, जनजातीय मंत्री अर्जुन जी भाई बहुत अच्छा विधेयक त्रिपुरा के लिए लेकर आए हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है, ये हमारी सरकार सदैव करती आई है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आपको ध्यान होगा कि हमारे मंत्रालय अलग हुए, हमारे आयोग अलग हुए, ताकि हमारी जनजातियों के बारे में सही जानकारियां प्राप्त करने के लिए सुगम रास्ता बना। और इसके बाद मैं माननीय सभापति जी ये भी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि सदन में कुछ भाइयों ने, विद्वान साथियों ने इस बिल में राजनीति को जोड़ा है, जबकि राजनीति को जोड़ना तो इन्हीं का कर्म था, क्योंकि एसटी एससी दोनों को केवल कांग्रेस की सरकार वोट बैंक मानती थी और वोट बैंक मानने के कारण ही न हमारा विकास हुआ, न हमें किसी मुख्य धारा में लाने का प्रयास हुआ। आज भी जिन राज्यों के अंदर ये सरकारें हैं, उन राज्यों में जनजातियों पर होने वाले भारत सरकार के बजट को खर्च नहीं किया जाता। भले ही आप राजस्थान को देख लें, भले छत्तीसगढ़ को देख लें, या भले ही अन्य राज्यों को देखें, महाराष्ट्र को भी देखेंगे तो आपको उसके अंदर भी विसंगति मिलेगी। मैं माननीय आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे बारे में घृणित सोच बनी हुई है कि केवल वोट बैंक के लिए हमको पूछा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर सवर्ण जातियों को भी 10% आरक्षण दिया, लेकिन इस आरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में इस तरह की सरकार है जो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को ही वोट बैंक मानती है, तो उनका पूरा बजट की समीक्षा होनी चाहिए। त्रिपुरा में आज कुकी भाइयों को, इस जाति को जो सम्मान मिलेगा, जो इनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नयन का साधन मिलेगा, इनको एक दर्जा मिलेगा, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल के बारे में सबको मन से सहमत होना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहूंगी कि एक समय था जब हम, आज भी मैं कहूंगी कि कुत्तों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपट निठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये किसी कवि ने गलत नहीं कहा। आज भी दूरस्थ, दुर्गम और जंगल के क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो हमारे जनजाति भाइयों का ये हाल है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने फिर एक बार ललकार दी है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ एक दीप जलाएं, बहुत धन्यवाद, दीप जलाएं। लेकिन मैं इसके साथ एक सुझाव भी माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगी कि जो लोग अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनके आरक्षण के सारे लाभ खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि वो दोहरा लाभ लेते हैं और दोहरा लाभ लेने के कारण हमारी जनजातियों की असली जो जातियां हैं उनको लाभ नहीं मिलता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री के सुरेश जी। Thank you, Chairman. Give me opportunity to participate. Yes, participate this Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022. Sir, of course, this bill is related to insert a community in tribal list from Tripura. But at the same time, throughout the country, the scheduled tribe communities are facing so many problems. But in the House, we are not getting chance to exploit scheduled tribes problems. Sometime whenever this type of the bills comes to the House, at that time only, scheduled caste MPs or scheduled tribes MPs can get an opportunity to expose the problem of these deprived communities. Now you are very busy to pass this bill. Okay, of course, we are ready to pass it. But at the same time, you have to give a sufficient time
for discussion of this subject. As I said earlier, of course, this matter is related to Tripura, but the throughout country of the scheduled, you are also very much aware in Gujarat, scheduled tribe problem. So I would like to request Honorable Minister and also Parliamentary Affairs Minister, give us sufficient time. Now, we are not, in this house, we are not discussing Tribal Affairs Ministry's demands and grants. We are not discussing any other opportunity to get a tribal issue. Only we are getting this type of the bill. I would like to request Honorable Chair, Honorable Speaker, please give us a sufficient time to participate in this issue. Sir, time to time, various governments, this government, that government, every government, so many castes inserting the scheduled tribes community. I have no objection. The government can include or insert any community in the tribal, eligible community in the tribal list. I am not against. But at the same time, what is the reservation for scheduled tribes? We are getting 2% or 3% or 4%. The existing communities are not getting benefit of the present reservation policy. If the compulsion of various governments, various political parties and vote bank, we are including time to time so many communities in scheduled tribes. But you are not enhancing the reservation. The existing reservation only, we are getting, the existing reservation is not enhancing, but you are, every session, you are inserting more community. It's a very, very serious matter, sir. And also, the tribal supply allocation also not increasing. And also the various ministries allocation also not increasing. So without increasing of the allocation, without increasing of the reservation, how these people will survive, sir? You are also very much aware of that. So I would like to appeal the government, you can insert any community for this scheduled caste or scheduled tribe list. At the same time, you have to enhance the reservation, you have to enhance the allocation of the tribal funds, sir. Sir, tribal funds, I am concluding, sir. Sir, initially I told you, sir, the importance of this. Sir, in my state, Kerala, sir, in my state, Kerala, one community, Vedar community, their living condition, their backwardness, everything come under scheduled tribes. Unfortunately, this community is still in scheduled caste. Government of Kerala already recommended to tribal department, Government of India, and also registrar of Government of India also recommended. But the proposal is lying in tribal ministry for long years back because there is no compulsion, there is no political pressure. That's why Vedar community from Kerala not inserted into the scheduled tribe. I would like to, I appeal to Honorable Tribal Affairs Minister Mundaji to look. You also gave assurance in the so many times in the house, but you did not do it. I would like to appeal to you to include Vedar community from Kerala. From Thank you, SC to Suresh. ST. Thank you very much, Suresh. I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding. Sir, I'm concluding. Sir, in Kerala, in Kerala, आपके अधीर जी भी बोलने वाले हैं. Kindly conclude it. मेरा को अधीर रंजन जी भी बाद में बोलने वाले हैं, तो you conclude it. He is our leader. He can ऐसा नहीं, speak anytime. आप conclude कीजिए. This time is not related to our time. He's a opposition. He's a समाप्त कीजिए. single opposition party leader. He can speak anytime. अपनी बात रखो. Why you are relating to Adhir Ranjan ji time to my side? You are from same It's not party. correct. You are from same party. Adhir Ranjan ji and we are entirely different. No. The time is allotted as per the party. Yes, as per the party, I am only taking allotted ठीक है, time. बात रखिए. I am only taking allotted time. I am not taking anybody. So
आप अपनी Sir, बात रखो, मैं I am नेक्स्ट नाम concluding, sir. पुकारता I am हूँ। हाँ, concluding. नेक्स्ट नाम Sir, पुकारता हूँ। in